So currently I'm standing on 24th level and I'll be showcasing this 4 BHK apartment available on lease. My name is Mukul Pava. I'm a second generation real estate agent based out of Gurgaon. I'm actively working on golf course extension area, and without wasting any time, I'll directly take you towards the green area premises and start this whole tour. So currently we are standing in M3M Merlin, and in this particular video, I'm going to be showcasing a 4 BHK rental property, and that is located on 24th level. This is the green areas where I'm standing right now. I'll give you a brief description on the property and this location, and then I'll be directly taking you towards the unit. And then there is a shopping complex right over there. तो आपकी डेली ग्रोसरी नीड्स, कुछ सैलून और ये सारी चीज़ें आपको उस कॉर्नर पर मिल जाती हैं. इस समय मैं खड़ा हूँ प्रोजेक्ट के सेंटर में. दिस इज़ अ 13.5 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल जहाँ पर आपको टोटल 10 टावर्स का ये प्रोजेक्ट मिलता है. एंड देन दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रोजेक्ट. इस मेन एंट्रेंस के ऑपोजिट में जो आप ये कमर्शियल बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज़ ओन्ड बाय AIPL, and this is a fully functional very habited commercial of this location. So आपकी जो भी डेली नीड्स, शॉपिंग, आप कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए जो भी चीज़ें करते हैं, आपको सारी जस्ट ऑपोजिट योर प्रोजेक्ट मिल जाती हैं. कमिंग टुवर्ड्स दिस सेक्शन, दिस इज़ द टावर वेयर द इन्वेंट्री इज़. सो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये 4 BHK का अपार्टमेंट विच इज़ लोकेटेड ऑन 24th फ्लोर. दिस इज़ अ ग्राउंड प्लस 26 स्टोरी बिल्डिंग, एंड जिसमें आप देखेंगे तो एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं. This is one of the very unique things about M3M Merlin, that they are only providing 2 apartments per floor. So each and every inventory is open from 3 sides, and you are getting ample amount of lighting and cross ventilation at the same time. So this was a brief description कि कहाँ पर क्या चीज़ है और क्या लोकेशन में हम खड़े हैं. Sector 67 की लोकेशन I have already told you. And also the club is fully functional. There are all the amenities inside. There is a fully functional swimming pool, a squash court, F&B outlet, then there is pool tables, senior citizens area, cards room, all these things are there. So it is a very nice club, very well maintained, and the property is also very brand new. So it was delivered in around 2017-18, and this is how the project is. This is the concept of the project, and now I'll be taking you directly towards the tower lobby and then towards the unit which is available on lease. So this is how your drop off zone is looking of both the towers. So ये tower 9 है और ये tower 10 है. So this is how the place is looking. और यहाँ से आप गाड़ी से नीचे उतर के you directly walk inside the double heighted tower lobby which is centrally air conditioned. You can quickly have a look, and then I'll take you directly towards the unit which is available on lease. So this is the place, and this is how it is looking. So over here you are getting a small sitting area for people to just sit around and wait for someone or for you guys. And then directly right from here we are entering inside the lift lobby. So currently I am standing in the lift lobby area of the 24th level, and यहाँ पर आपको 2 fire exits मिलते हैं. One एक इस तरफ है and the other one is right over here. As I told you, 2 ही apartments हैं per floor. So one is just behind you which I am going to be showcasing, and the other one is looking like this. And then there are 2 elevators, and this is how the lift lobby area is. The total height of the tower is ground plus 26, and हम हैं 24th floor पर. This is the main entrance door of the unit. This is a 3300 square feet of 4 BHK plus servant layout. This is the door which is connecting the servant room, and then इसका एक internal access है kitchen के साथ में. This is locked, so I'll directly showcase from inside the kitchen. So this is how the layout is. While we are entering inside the property, we are facing south, and while we are exiting the unit, we are facing purely north. So we are directly entering inside the living dining section of this layout, and आपके पीछे का जो view है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. You can have a look from your main entrance door, and then I'll just close this door and we'll come inside. So now coming back towards the layout, ये आपका पूरा लिविंग डाइनिंग सेक्शन है. यू कैन स्टैंड एट दैट कॉर्नर, और मैं चला जाता हूँ उसके बिल्कुल दूसरे एंड में, जिससे कि आपको पता चल सके कि हाउ द साइज इज. सो दिस इज द साइज ऑफ दिस लिविंग डाइनिंग सेक्शन, एंड इसके जस्ट ऑपोजिट में ही किचन दिया हुआ है. So this is a 4 BHK layout where I'm standing right now, and इसका जो layout का design है आप already ज़्यादा complicated नहीं है. यहाँ से हमने enter किया था, living dining इसका combined है, and then you are getting a kitchen just behind this wall. इसके जो चारों bedrooms हैं वो इस तरफ हैं. So first bedroom is just behind this wall, and then the second, the third and the fourth one right over there.
जो इसका सर्वेंट रूम है उसका एक्सेस आपको मिल जाता है किचन से इंटरनली कनेक्टेड, एंड देन यू आर गेटिंग एम्पल विंडोज राइट, यहाँ पर इस तरफ भी आपको विंडोज का प्रोविजन दिया हुआ है, इस तरफ भी है, and I'll show you the view from this 24th level so you can have a look how beautiful the view is. So because there are only 2 apartments, आपको front side में हमेशा park facing view ही मिलता है, and then on the other side you are getting the city side view. So this is how the society is looking from inside. So there, that's your club जहाँ पे अभी हम नीचे खड़े थे, and then those are the swimming pools right over there, and आपको बीच बीच में सारी sports amenities मिलती रहेंगी, and that is the small shopping complex which I was pointing at before. And this is the whole vibe of this project. This is a very nicely maintained, this is a 5.5 feet wide balcony where I am standing right now, ample sunlight as you can see, and then there is good cross ventilation happening. This was the first balcony of the layout. Now we are coming back inside. So as this apartment is only available on lease, just mentioning what you are getting with this apartment, you are getting a modular kitchen, you are getting air conditioners in all the bedrooms, then there are light and fan fittings you are getting. There are 2 covered car parkings in the basement, and if I have missed something right over here, you can check the description box below for all the details of this particular property. Moving ahead from the living dining section, I'll take you towards the kitchen. So इसके right side में आ जाती है kitchen, and this is the size of this area. So entrance kitchen में enter करते ही आपके इस corner पे आपको मिल जाता है आपके refrigerator का space, and then you have the countertop on both the ends, both the sides, और gas pipeline इसमें operational है. This is a semi-modular kitchen. You are getting hob, chimney and a fan right over here, और कुछ cabinets आपको मिल जाते हैं. एंड इसके साथ आपको यूटिलिटी बालकनी कनेक्टेड मिलती है किचन के साथ में, और दिस इज द स्पेस ऑफ द यूटिलिटी बालकनी. हालांकि यूटिलिटी बालकनी थोड़ी छोटी रहती है, बट स्टिल दिस इज अ 4 BHK, सो उस हिसाब से ही आपको स्पेस दिया हुआ है. यहाँ पर आपको एक वेट पॉइंट मिलता है, एंड यहाँ पर आपको फ्रंट साइड का व्यू मिलता है इस तरफ से. सो दिस इज द फ्रंट साइड, आई मीन द मेन रोड व्यू विच यू आर गेटिंग. सो वी आर इन सेक्टर 67, दैट इज सेक्टर 66 इसके ऑपोजिट में. एंड जो आप ये बड़ा सा यूनिट देख रहे हैं, दिस इज़ द VRV यूनिट. सो जितने भी अंदर एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं उसका एक सिंगल आउटपुट यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है, एंड दिस इज़ योर दिस IGL गैस मीटर, एंड देन दिस इज़ द सर्वेंट रूम विच इज़ लुकिंग इन अ वेरी डिसेंट शेप. तो हालांकि लोग थोड़ा बहुत गंदा छोड़ देते हैं, बट दिस इज़ द स्पेस यू आर गेटिंग. सो जो इसका डोर आप जो देख रहे हैं फ्रंट में, दिस इज़ ओपनिंग टूवर्ड्स द लिफ्ट लॉबी एरिया, एंड देन यहाँ पर इसका एक अटैच्ड रेस्ट रूम भी है. सो कमिंग आउट ऑफ द सर्वेंट, सो द कंसेप्ट ऑफ द सर्वेंट इज दैट यू कैन जस्ट लॉक योर किचन एंड योर सर्वेंट कैन स्टे इन द अपार्टमेंट while you are not here. And so this was the whole area, this was the whole concept of the kitchen, living, dining and the servant area. Also mentioning you are getting wooden flooring in all the bedrooms and Italian marble in this all the common areas. Now moving towards the first bedroom of this layout, this is the master bedroom. So you are entering inside like this, you are getting wooden flooring, and then यहाँ पर आपको मिल जाते हैं आपके storage के wardrobes which are up till ceiling height, and then एक air conditioner आपको यहाँ पर मिल जाता है, and then you can bring more wardrobes if you require. एंड यहाँ पर आपको साथ में एक अटैच्ड बालकनी भी मिलती है, बिकॉज अगेन कॉर्नर यूनिट है तो आपको विंडोज का प्रोविजन भी मिलता है. सो द वेंटिलेशन इज वेरी नाइस. अगेन आपको जो व्यू रहेगा यहाँ पर वो दैट विल बी द व्यू विल बी एग्जैक्टली सेम विच आई शोड यू फ्रॉम द फर्स्ट बालकनी. सो दिस इज ऑल्सो पार्क फेसिंग. सो ये मास्टर बेडरूम का फर्स्ट बालकनी है, and then you have the bathroom just at this corner. So there is a vanity right over there, and then you have the WC and एक shower cubicle आपको पूरा right side में separate मिल जाता है. This is the first bedroom of this layout. Coming out of the first bedroom, you can quickly have a look in the second bedroom. So this is the second bedroom. इसके साथ में जो washroom है वो connected नहीं है. विंडोज का प्रोविजन आपको इस बेडरूम में भी मिलता है, सो द वेंटिलेशन इज़ वेरी नाइस. वार्डरोब्स आपको मिल जाती हैं, और इस बेडरूम के साथ में जो बाथरूम है वो आपको कॉमन यहाँ पर मिलता है.
I cannot show you this bathroom because this is locked right now, but this is a bathroom for your common guest. जो भी बाहर लोग आपसे मिलने आते हैं, आप उनको ही access दे सकते हैं. And this particular bedroom will be having the access of this particular bathroom. Now walking down the passage, मेरे साथ में आ जाते हैं दो bedrooms और एक मेरे इस तरफ right side में है जिसके साथ में balcony connected नहीं है. So this is a kids bedroom. There are L-shaped windows right over there. एंड देन अगेन आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है, एयर कंडीशनर्स मिलते हैं. इसकी जो वार्डरोब्स हैं वो पीछे की तरफ बनी हुई है यहाँ पर. एंड देन यू हैव दिस अटैच्ड रेस्टरूम विच इज वेरी स्पेशियस. सो दिस इज दी थर्ड बेडरूम, द किड्स बेडरूम, जिसके साथ में बालकनी आपको अटैच नहीं मिलती है. टोटल इसमें 4 बालकनीज है इंक्लूडिंग द यूटिलिटी वन. एंड अभी हम आ चुके हैं फोर्थ वाले बेडरूम में. दिस इज द फोर्थ बेडरूम. And you are getting a attached bathroom, wardrobes, and then the front side. I mean, you can have the views of this commercial I was talking about and everything else surrounding the city. So this is the AIPL Joy Street, the commercial, which is one of the most happening place of Sector 67. And then this is all low-rise residential areas right over there. So in terms of view, sunlight and the facing of the apartment is very nice. Coming back inside the fourth bedroom, I'll just shut this door. So if you are checking out something for the rental purpose in this location of this big size, you can definitely contact us. And in Merlin, in particularly in this project, there are a little smaller sizes available as well, such as 2356 square feet for a 3 BHK and a 2000 square feet for a 3 BHK. So there are two different layouts, and this is one of the biggest layout of this particular society. We are back in the living dining section, and you can again feel the space, right, what you are getting right over here. This is a 3300 square feet. Coming towards the rental asking of the property, this is the rental asking is 1,15,000 plus maintenance, and you're getting 2 covered car parks. Maintenance is roughly around 10 to 11,000 rupees per month. And this was the whole tour of this property. I hope you have enjoyed this video. All the details of the property will be in the description box below, and you can check that out. Thank you so much for being here. It means a lot. I'll see you in the next one very soon. Thanks.